Hey there, I am Purvi. In today's lesson, I am going to discuss quantifiers. Now, what are quantifiers? Quantifiers are measure words. So, it is a word, right, which is used before a noun to describe its quantity. कुछ कितना है जब कोई क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो मेनी टाइम्स वी यूज क्वांटिफायर्स. कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी यूज क्वांटिफायर्स? व्हेन यू डोंट नो द नंबर, राइट? एग्जैक्ट आपको क्वांटिटी पता नहीं है, इन दैट केस वी यूज क्वांटिफायर्स. प्रैक्टिकली इट आंसर्स क्वेश्चंस हाउ मच एंड हाउ मेनी. कितना है उसका जवाब मिलता है. करेक्ट. नाउ यस, आपने ये सारे वर्ड्स आप फेमिलियर ही होंगे. मेनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, टन्स ऑफ, plenty of, a few, a little, a bit of, enough, some, any. These are all quantifiers, measure words. Now look at this first line. Many, much, a lot of, lots of, tons of, plenty of. These words you use when you talk about large quantities. बड़ी quantity की बात करेंगे, you have this many options. But if you are talking about small quantities, you would say a few, a little, a bit of, that is थोड़े के लिए. So when you have sufficient things, you use enough. Yes, and when you don't know the number, right, whether it is big or small, quantity पता नहीं है, in that case you use some and any. So ये lesson में क्या सीखेंगे, हम क्या सीखने वाले हैं? In this lesson you will understand how to use some, somebody, something, somewhere, any, anybody, anything, anywhere. All this, how to use all these words in a situation. कहाँ पर use करेंगे, right? So see, these some and any you use with plural nouns and uncountable nouns. What do you understand by plural nouns? जिसको count कर सकते हैं and it is plural in number, right? So a boy is a singular noun, boys is plural noun, right? Fruit is a singular noun, fruits मतलब plural noun, correct? तो plural noun and uncountable noun. What do you mean by uncountable noun? Substances, right? Or feelings, abstract nouns. So जिसको count नहीं कर सकते हैं, this uncountable nouns के साथ भी आप some और any का use कर सकते हैं. And in general, we use some and any in some in positive statements and any in negative statements. Now let's look at some examples. She bought some vegetables yesterday. कल उसने कुछ सब्जियां लाई, राइट? तो सम वेजिटेबल्स. यस, नाउ इफ हियर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, अगर आपको सेंटेंस बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको वाक्य बनाना नहीं आता है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फंडामेंटल्स के बेसिक के लेसन्स पहले चेक कर ले, थोड़े सेंटेंस भी बनाना सीख जाए, देन दिस विल बी मोर हेल्पफुल एंड यूजफुल. सो शी बॉट सम वेजिटेबल्स यस्टरडे. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वेजिटेबल्स प्लूरल नाउन है, राइट? And some is quantifier. I think there is someone at the door. मुझे लगता है कि कोई दरवाजे पे है. I am hungry. I want something to eat. मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए कुछ. That is something. Help me get my keys. Help me get my keys. मुझे मेरी चाबी जरा ले दो. It must be somewhere around the table. It must be somewhere around the table. It must be somewhere in the door. कहीं ड्रॉर में होगा या कबर्ड में होगा या टेबल के बाजू में होगा. हेल्प मी गेट माई कीज. नाउ सी, दिस इज ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट. सो वेन एवर यू यूज सम, यू अंडरस्टैंड. सी, यहां पर मुझे पता है कि कहीं पर है, द थिंग इज एक्चुअली देयर एंड यू आर आस्किंग अबाउट इट. नाउ लुक एट दिस एनी, राइट? सो एनी वी यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली. सो देयर आरंट एनी ऑरेंजेस इन द फ्रीज. तो फ्रीज में कोई ऑरेंजेस नहीं है. देयर आर नॉट एनी ऑरेंजेस. देयर आरंट एनी ऑरेंजेस. आई डिडंट कॉल एनीबडी फ्रॉम द लिस्ट. सो आई वॉज हैविंग अ लिस्ट. मेरे पास पूरा लिस्ट था, बट आई डिडंट कॉल एनीबडी फ्रॉम द लिस्ट. लेकिन मैंने उसमें से किसी को भी फोन नहीं किया. आई डिडंट कॉल एनीबडी फ्रॉम द लिस्ट. आफ्टर दैट शी नेवर हेल्प्स एनीवन. यस, प्रेजेंट सिंपल, शी नेवर हेल्प्स एनीवन. वो किसी को मदद नहीं करती है. I won't spend any money on unnecessary things. I won't spend any money. मैं कुछ खर्चा नहीं करूंगी. I don't want to eat anything. मैं कुछ नहीं खाऊंगी. You can't go anywhere without permission, right? You can't go anywhere without permission. They can't call anybody randomly for the service.
सो यू कैन ऐड लॉट ऑफ सेंटेंसेस, राइट? इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव और प्रैक्टिस करने चाहिए. सो सम यू सी इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स and any you see in negative statements. Now let's check further now. Now you use some and any both in questions. जब questions बनाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो बहुत जगह पे some और any दोनों का use होता है. So sometimes you are making an offer, right? Sometimes you are requesting somebody. See example, could you pass me some salt? It is a request, polite request, right? क्या तुम मुझे थोड़ा salt pass कर सकते हो? Could you add some more milk in my coffee? मेरी कॉफी में थोड़ा और मिल्क ऐड करके दोगे, राइट? कैन यू गेट मी समथिंग टू ईट? आई एम स्टार्विंग. मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा. आई एम स्टार्विंग मतलब आई एम हंग्री. प्लीज कैन यू गेट मी समथिंग? विल यू कॉल समबडी टू क्लियर द मेस? क्या आप किसी को बुलाएंगे ये मेस क्लियर करने के लिए? आरंट वी स्टडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग? क्या हम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं? सी दिस आर ऑल क्वेश्चंस. यू आस्किंग फॉर समथिंग. हैज एनीवन सीन माय अम्ब्रेला? क्या किसी ने मेरा छाता देखा है? सी यू आर आस्किंग क्वेश्चन. एनी भी यूज होता है, राइट? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यहाँ पर हैव मिसिंग है, राइट? स्टूडेंट्स मेक अ नोट. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जब आप लेसन देखेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट सिट विथ योर नोटबुक एंड पेन सो यू कैन राइट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स. हैवंट यू कॉल एनीबडी टू फिक्स दिस एसी? हैवंट यू कॉल एनीबडी? क्या आपने किसी को नहीं बुलाया है? इज देयर एनीथिंग दैट आई नीड टू डू? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे करने की जरूरत है, राइट? सो दिस आर ऑल क्वेश्चंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस. यस, इंग्लिश इज फनी. देयर आर मेनी एक्सेप्शंस. सो आई टोल्ड यू दैट जनरली any is used in negative statements, but look at these examples now. We are using any in positive statements, but the meaning here is negative. तो negative meaning है लेकिन sentence positive है. In this situation you can use any also in positive statement. So she left home without anything. She left home. वो चली गई, right? Without anything. It is a negative statement, but we are using anything. Yes. She refused the offer without giving any explanation. She refused the offer, right? She got some very good offer for the job maybe, but she refused it without giving any explanation. Negative statement. She went to market without any money. In a hurry, right? In a hurry, जल्दबाजी में she went to market without any money. It is a deserted place and hardly anyone comes. Hardly anyone comes. यहाँ वहाँ कैसे बोलेंगे? Hardly anyone comes. वहाँ कोई नहीं आता है, right? It is a deserted place. वीरान जगह है. Hardly कोई यहाँ आता है. Now see, look at this different expression now. To practice reading, you can read any book of your choice. To practice reading, you can read any book of your choice. So reading practice करने के लिए आप कोई भी book पढ़ सकते हो. See, यहाँ पर the meaning is different. I told you that any and some we use with plural nouns, right? Plural countable nouns. But here I have written book, any book. Now book is a singular noun. But यहाँ पर what is the situation? यहाँ क्या meaning है? कोई भी बुक चलेगा, राइट? कोई भी किताब पढ़ सकते हो. इफ यू वांट टू improve your reading, you can read any of the book. Similarly, you can say to stay fit and healthy, you can eat any fruit in the morning, right? कोई भी fruit खा सकते हो. कोई भी चलेगा. For that you use any. So here with singular noun also हमने any का use किया. Let's look at some more examples. Now see. Now, yes, few more examples. Which song do you want me to play? I would say any song is fine, right? I like all. When do you want me to come? कभी मैं आ जाऊं? You can come and see me any day, any time. कभी भी आ जाओ, right? कभी भी. You are giving. See, there is no specific choice यहाँ पर. कुछ भी चलेगा. Let's go out somewhere. Where to go? Anywhere is fine. Let's just go out. Anywhere is fine. कहीं भी चलेगा, but बाहर चलते हैं. Now, would you like to order pizza or pasta? Would you like to order? You would say anything is fine. I love both. कुछ भी चलेगा, right? So some and any. So see, some we use in positive statements, any we use in negative statements. But you use any in positive statements when the
Sentence is practically negative, but it is a positive statement. There also you use. When you talk about choice, that there is no specific choice, at that time also you use some and any, both. See, understand all this again, and then see, you should watch this again, this much part, and then let's solve now one exercise. Yes, now it's your turn. क्या करना है आपको? Yes. Now there are sentences and you would, yes, fill in the blanks with some or any, but some or any के साथ आपको you can add somebody, something, somewhere. Anybody, anything or anywhere, or some and any, right? Lot of options. Let's look at first example. So she always hides. What is hides? छुपाती है, हमेशा छुपाती है. Never tells. क्या आएगा? She always hides. Never tells anything. कुछ भी नहीं बताती है, right? So she always hides and never tells anything. Now, what are you searching? What are you searching? तुम क्या ढूंढ रहे हो? Have you lost anything or something? दोनों दिमाग में आ रहा है, right? Have you lost something? Now, why something? Because I know that he is searching, so definitely something is there. कुछ तो exist कर रहा है यहाँ पर. So I would say, have you lost something? Do you live dash near the station? Now see, check answer also. No, I live in another part of the town, right? I live in another part of the town. Somebody is asking me, do you live? Now what is correct? Anywhere? No. Do you live? See, now you can put anywhere and somewhere both. See, many a times you will feel that कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Look at answer, right? No, I live in another part of the town. So here I can say, do you live anywhere near the station? No, because सामने वाले को पता नहीं है, right? When you don't know the thing is there or not exist करता है कि नहीं, anywhere is fine. So do you live anywhere near the station? No, I live in the other part. She was not hungry. उसको भूख नहीं लगी थी. So she didn't eat. Negative statement. So it is always anything. She didn't eat anything because she was not hungry. I am attending my online classes now. The situation में आप अभी अपने online classes attend कर रहे हैं, right? So आप क्या बोलेंगे? If dash calls, tell them to call me after an hour, right? After an hour, tell them to call me. उन्हें बोलिए कि मुझे 1 घंटे के बाद कॉल करें. Now what is the right option? If someone calls me, right? Or if somebody calls, tell them to call me after an hour. He is always at home. हमेशा घर पे होता है. He doesn't seem to go. Doesn't seem. What is seem? लगता है, right? तो मुझे लगता है कि वो नहीं जाता है बाहर, ऐसा मुझे बोलना है. He is always at home. He doesn't seem like, or he doesn't seem to go anywhere. कहीं भी नहीं जाता है. Now, yes, dash can learn to speak in English. It's easy. Now, somebody can learn to speak in English. It is easy? No. You can say anybody can learn English. It's easy. Anybody can learn. Yes. Now, does dash mind if I open the window? Yes. Do you mind? कोई आपको एतराज तो नहीं है? मैं खिड़की खोल दूं. I open the window. आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? So does anyone mind? Right? Does anyone mind? So यहाँ पर मुझे पता नहीं है practically किसी को mind करेंगे कि नहीं करेंगे. I would say, does anyone mind if I open the window? Now there is dash at the door. Can you just go and check? Can you go and check? मतलब आपको जरूर लग रहा है कि कोई है. So you would say, yes, there is someone at the door. There is somebody at. ना someone and somebody is fine, right? दोनों एक ही होता है. So there is somebody at the door. Can you just go and check? This is the easiest one. Can I ask you? Yes, can I ask you something? I would like, desire, right? कुछ इच्छा करने के लिए होता है तो हम बोलते हैं I would like to do something. So I would like dash information about programming languages. So I want any information about programming languages? No. You would say I want some information. I would like some information about programming languages. Yes, now to improve English,
you can listen to some piece of English conversation daily? No. To improve English, you can listen to any piece of English conversation, right? Any piece of English conversation. कुछ भी थोड़ा सा एक regularly listening करेंगे तो definitely that will help you improve your fluency. Lot of reading, understanding, that will make you confident and comfortable in conversation. Practice more, understand again. Yes, you can any day ask your doubts in the comments below. फंडामेंटल्स के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहे हैं, तो पहले थोड़े बेसिक वाले टेंसेस के वीडियो जरूर चेक कर लीजिए. ठीक है, फाइन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. थैंक्स फॉर नाउ. बाय.